So today we will discuss the vasculature of thoracic valve. Vasculature means the blood vessel and the blood supply to the thoracic valve. So the main arteries that supply to the thoracic valve are the subclavian artery, the axillary artery, and the thoracic aorta. So now we will discuss the subclavian branches. The subclavian artery is the branch from the brachiocephalic trunk which arises from the arch of aorta. So subclavian artery gives off around about 10 branches. The vertebral artery, thyrocervical trunk, inferior thyroid artery, superficial cervical artery, suprascapular artery, deep cervical artery, and dorsal scapular artery. So these are the arteries that the branches of subclavian artery, but it does not give any branch to the thoracic valve. So here are the arteries that gives off the branches to the thoracic valve. The internal thoracic artery, superior intercostal artery, and costocervical trunk. So this one is the brachiocephalic trunk. Here is the subclavian artery, right? This one is the subclavian artery, and from its anterior side, the internal thoracic artery arises, and it descends downward behind the costal cartilages. अगर मैं इसके व्यू को थोड़ा सा नीचे से लेकर आऊँ तो बिल्कुल मैं इसका इन्फीरियर व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है, इन्फीरियर व्यू है। और तो ये क्या है, ये सबक्लेविन हो गया, और ये क्या है, इंटरनल थोरैसिक, और ये कॉस्टल कार्टिलेज के बिल्कुल ही इनसाइड जो है जा रही होती है, डीप है थोड़ी सी। इसके साथ ये 1 फिंगर ब्रेथ लेटरल टू द स्टर्नम। अब ये हो गया स्टर्नम और ये हो गया क्या, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 फिंगर ब्रेथ है, 1 फिंगर की जो है इसमें डिस्टेंस है, ठीक है। अब इंटरनल थोरैसिक आर्टरी जो है इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज जो होती है, जो बीच में हर रिब के बीच में जो आर्टरीज होती है, एक तो इंटीरियर आती है, एक पोस्टीरियर आती है। तो जो पोस्टीरियर इंटीरियर है, फर्स्ट 6 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी वो अराइज होती है किससे, थोरैसिक आर्टरी से, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से अराइज होती है। इसके साथ ही एक और ब्रांच है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मस्कुलोपेनिक आर्टरी, राइट। Now the musculophrenic artery gives off the rest of the anterior intercostal arteries, okay, and then also the perforating branches. These are the perforating branches. This one, this one, these one, right. These are the perforating branches. This is the interior intercostal artery. This is the interior intercostal, okay, interior intercostal. First 6 anterior intercostal artery arises from the internal thoracic artery, and the anterior intercostal artery of lower spaces are the branches of the musculophrenic artery, and musculophrenic artery is one of the terminal branch of the internal thoracic artery. Now the subclavian artery, from it the costocervical trunk arises, which gives off the superior intercostal artery, okay, superior intercostal artery, and then it gives off the first 2 posterior intercostal arteries.
So this one is the subclavian artery. Here is the costocervical trunk, this one, okay, and it divides into deep cervical artery, okay, deep cervical artery, and the supreme intercostal artery or the superior intercostal artery. It's the same, okay. So superior सुप्रीम इंटरकॉस्टल आर्टरी होगी और इसी सुप्रीम इंटरकॉस्टल आर्टरी से एराइज होती है द फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी and the second intercostal arteries. Okay, so the first and second posterior intercostal arises from the superior intercostal artery, which is the one of the branch from the costocervical trunk, and the costocervical trunk arises from the subclavian artery. सो द फर्स्ट 6 एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज जो हैं वो किससे राइज होती है? इंटरनल थोरैसिक आर्टरी डायरेक्टली, and the anterior intercostal artery of lower spaces are the branches of the musculophrenic artery, which is the branch of the which is one of the terminal branch of the internal thoracic artery. So we have the 11 intercostal spaces. So we will have the 11 anterior, also the posterior intercostal arteries. So the first two posterior intercostal artery arises from the superior intercostal artery of the subclavian artery, okay, and the rest of the 9 posterior intercostal artery arises from the thoracic descending aorta. If you do not call it the thoracic, just call it the descending aorta. So here is the descending aorta, descending aorta, and the branches posterior intercostal, posterior intercostal, posterior intercostal. So it goes down all the way to the last one. So the 9 lower spaces, it has the posterior intercostal artery arises from the descending aorta, thoracic descending aorta. Now we will discuss the axillary artery. The axillary artery, you know, the axillary artery we have studied it in the upper limb, right? So this one is the axillary artery, the continuation of subclavian artery after the first rib, the आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप से लेकर जो लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीस मेजर मसल है उस तक ये कौन सी आर्टरी हो जाती है? ये एक्सिलरी आर्टरी हो जाती है. द कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी आफ्टर द फर्स्ट रिब अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीस मेजर मसल. अब इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है. ये एक्सिलरी आर्टरी हो गई. इससे फर्स्ट जो है वो यहाँ पे कौन सी आर्टरी है? ये हाँ, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी से एराइज होती है, राइट? सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी arise from the first part of the and it also gives supply to the thoracic wall. You know, it's above the thoracic wall. This one here is the lateral thoracic artery, and lateral thoracic artery arises from the axillary artery from the second part. Now the thoracoacromial artery, so here is the thoracoacromial artery, and thoracoacromial artery gives off 4 further branches. Here is the acromial branch, here is the deltoid branch, here is the pectoral branch or the breast branch,
and that one is the clavicular branch. So the branch, the pectoral branch gives blood supply to the thoracic wall, the pectoral branch.